Hello everyone. In the given problem, a uniform road of mass m, length L, length L है, is stuck at end by a force F perpendicular to the road for a time interval t. Short time interval t है. First of all, calculate करना है the speed of the center of mass of the. ठीक है. First of all, calculate the speed of the center of mass of the ball. So first of all, draw the diagram of this problem. Road. A force is stuck at the end of this F. Now, velocity of center of mass is V at this point L by 2. Okay. So, we know that for a small interval of time, short interval, so we know that impulse, linear impulse, linear impulse equals to change in momentum, change in linear momentum. Linear impulse means that force into t for short interval of time, and change in momentum. Initially this road is rest, that means center of mass is at rest, so finally mass of road and velocity of center of mass equals to 0. So linear velocity v equals to ft divided by equation number first. Answer of first part. Okay. Second part, first of all, starting d part, the angular momentum of the road about the center of mass after the force has stopped to act. So we know that angular impulse equals to angular momentum, change in angular momentum. Impulse is that torque into small time interval of acting angular impulse, torque d theta dt equals to delta L. But so for torque is the about the center of mass act, and the direction is that force F, and this is the L by 2. Finger is spread in the direction, curl in this direction. After stuck, road is rotating with angular velocity in this direction. So omega is also outward and torque is also outward. So torque Ft force इनटू में टॉर्क निकालना है L by 2 हो गया, और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t हो गया. डेल्टा L की वैल्यू अगर अपन बात करेंगे तो इनिशियली वो रेस्ट पर थी, तो आई ओमेगा हो गया. ठीक है. अभी नहीं करते आई ओमेगा क्योंकि अपने पास एंगुलर मोमेंटम भी पूछा है उसने पूछा अपने पास एंगुलर मोमेंटम पूछा. ओके. तो यहाँ अपन ने लिख दिया एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एफ टी एल डिवाइड बाय 2. दिस आंसर ऑफ डी पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, बी पार्ट क्या पूछा है अपने से. अगर अपन बी पार्ट की बात करेंगे तो बी पार्ट पूछा है, क्या पूछा गया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड अबाउट द सेंटर ऑफ मास. अगर अपन बात करें तो ये रोड ऐसे है, ये ऐसे मूव करेगी. ठीक है. ये फिर ऐसे हो जाएगी, ये दिस द लाइन ऑफ मोशन. अगर अपन इसमें देखेंगे तो अपने पास जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो होगा. क्यों होगा, क्योंकि रोड इज रोटेट अबाउट दिस पॉइंट. ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे हो जाएगी वापस अगेन. सो रोटेट विद एंगुलर, because linear motion of center of mass is passing through the line of motion. So linear ट्रांसलेशनल अपने पास कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल मोमेंटम कितना होगा, जीरो. सो moment of inertia of this point, the rotate is with omega. So moment of inertia of road when the axis passing through the center, ml square by 12. Okay. Now we know that L equals to I omega. So value of L, put the value from equation second, F T L divided by 2 equals to ml square divided by 12 omega. L cancel out 1 and 6.
So finally the value of omega equals to 6ft divided by ml. This is the value of omega. This is the value of omega. This is the answer is B part. Now C part. C part kinetic energy of the fluid. So total energy पूछिए. टोटल एनर्जी दैट मीन्स अगर अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपने पास रोटेशनल भी होगी और ट्रांसलेशनल भी होगी आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर ओके नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन ठीक है देखिए क्या होगा 1/2 ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12 n2 में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m put the value of v f square t square divided by m square okay cancel out to m also put the value of omega ml square by 12 into value of omega this 36 f square t square divided by m square l square plus f square t square divided by 2m okay now kinetic energy equals to L square cancel out to L square 1 m is cancel out m 1 thrice तो हो गया 3/2 f square t square divided by m plus f square t square divided by 2m. So final answer is that 2 f square t square divided by m. This is the kinetic energy of the rod. Okay, I hope this question is now more clear. Thank you.